So very good evening to all. Welcome to the DP chemistry. तो आम तुम 11 क्लास 11 लेक्चर स्टार्ट करने को जाऊँ बट प्रायर टू दैट किसी इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन अच्छी मुझे तुम सांगे शेयर करने को चाहूँगी. नंबर वन थिंग योर क्लासेस विल बी कंटिन्यूड. तुम ये जमी क्लास देखुच सेमती क्लास देखिपर. देयर विल बी नो इश्यू. फॉर मोर डिटेल्स यू कैन डाउनलोड द डीपी केमिस्ट्री ओडिया ऐप. जो ऐप भितर तुमको ये जो क्लास होचे क्लास रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हम प्लस तुम जो नोट्स अच्छी तुमको नोट्स भी सेटा प्रोवाइड कर दिया जीवो. एंड इट विल बी इजियर फॉर यू. कारण बहुत समय कौन हुए पिला बहुत क्लास देखी सारा कहते सर यूट्यूब देखला बेले डिस्ट्रैक्शन होची. तो आमर ओनली क्लासेस गुड़ा से विदिन 10 to 15 days भितर अपलोड कर दिया जीवो. एंड यू विल गेट दोज क्लासेस डायरेक्टली फ्रॉम द एप्लिकेशन. एंड टेलीग्राम तुम लिंक रे ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप दि जाइए. टेलीग्राम चैनल भी लिंक दि जाइए. यू जॉइन दोज फॉर मोर डिटेल्स लाइक तुम नोट्स तुमको किसी एक्स्ट्रा क्वेश्चन अच्छी तुमको से प्रोवाइड करा. इट इज प्रोवाइडेड इन द ग्रुप एंड द ऐप इटसेल्फ. सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड मोर क्लैरिटी यू नीड टू डाउनलोड द डीपी केमिस्ट्री ओडिया ऐप. तुमको बर्तमान ये जिन शो करनी विदिन तुम ये क्लास देख बट 10 to 15 days भितर will make available all the videos inside the app only and it is free of cost. Okay, so today we'll start the unit dimension for class 11. But before entering to the physics world गोटे स्टोरी थ्रू रे तुमको फिजिक्स रो अंडरस्टैंडिंग मु करया को चाहूची. with a story I want to make you clear what exactly the physics is. से जिनसटा बुझिया पई चेष्टा करिवो एंड केयरफुली सुनिवो. तो जनरली आम जब स्टोरी विषय कथा हवा आम चेस खेल विषय कथा हवा. दी जन सांग बसिकी चेस खेलुंट एवं थर्ड सांग ताको बसिकी देखुची. एंड जेहेतु से बसिकी देखुची जे देखुची ता खेल देखुची ता मम्मी ताको बिगुड़ुचंती. कौन जे खेल किछि नाही खाली बसिकी खेलटा देखुची बट से खेलर प्रतिटी मूव ता मम्मी को बतौची. एटा होची तमरो स्टोरी रो फाउंडेशन. वर्तमान देखो केमती हबो ए जिंसटा. जनरली आम जाचु चेस खेलला बेले हुए कौन ना ए आम टोटाल 64टा घर थाए. ओके एंड तुम ये घर गुड़ा सब गोटी थाए. सपोज कर ये तुम गोटे फ्रेंड अच्छी. सपोज कर फ्रेंड ना है सुषमा. लेट दिस बी सुषमा एंड सपोज दिस इज अ फ्रेंड निकिता. दे आर प्लेइंग चेस. ये माने दी जन चेस खेलुचंती. दीपटे गोटी थुआ है एंड तांकर गोटे फ्रेंड ये बसी हुज नेम इज प्रत्युष. एंड ये प्रत्युषर मदर अच्छंती. ओके तो बर्तमान चेस खेल हम क्या भितर ना सुषमा आ निकिता एंड प्रत्युष इज वाचिंग. ताको चेस खेल विषय कौन सी आइडिया नहीं. से जाने नहीं जे एक्जाक्टली चेस खेलटा कौन चेस रो रूल कौन कौ गोटी केमती चले. तो सुषमा और निकिता खेलुचंती प्रत्युष बसिकी देखुची. जेहेतु प्रत्युष रो टाइम वेस्ट होची सेतपई ता मम्मी ताको बिगुडुचंती. बट ये तार प्रतिटी मूव ता मम्मी को फोन थ्रू रे जणाउची. कौन है जो चेस खेल आरंभ है सुषमा कौन कला आम जमी गोटे बोट अच्छी आम कहू आम कह सोल्जर बोली. सोल्जर सब बड़े फॉरवर्ड मूव कर. तो प्रत्युष जिनसटा को बुझिला कौन ना जितेबाला भी सोल्जर मूव कर इट विज ऑलवेज मूव फॉरवर्ड. ये केवल फॉरवर्ड चलो. जितेबाला तुम अच्छी ये गोटे कहती एलिफेंट बोली और किसी जगह कैमेल बोली कहती. तो सी जितेबाला मूव कर सब डायगोनाली मूव कर. तो एमती खेल चलला भितर से डिफरेंट डिफरेंट जो तुम गोटी अच्छी जमती तुम सोल्जर है तुम क्वीन है किंग है
बोट्स है पन है हॉर्स है कि समय पर देखला कौन ना हॉर्स रो मूवमेंटा केमतिया ना हॉर्स रो मूवमेंट है अढ़ई पाद तो प्रत्युष बसिकी प्रतिटी गोटीर मूवमेंट मार्क करुच्ची एंड से मार्क करके ता मम्मी को बतौची जे मम्मी एई गोटीटा एमती चले एई गोटीटा एमती चले बट गोटे पोजिशन आसिला एपट सोल्जर को ये फॉरवर्ड करची एपट सोल्जर को ये फॉरवर्ड करची बट जिते आसिले एई जगह जो सोल्जर अच्छी ये कौन करची ए सोल्जर को एमती डायगोनाली हिट करची ता माने कौन से जानिथिला जे सोल्जर सब स्ट्रेट लाइन रे जीवो अन्य सब स्ट्रेट लाइन रे जीवो किंतु जेतेबेले से हिट करने को चाहिए सेतेबेले से डायगोनाली हिट करिवो ता माने से गोटे लॉ मने मने बने नहीं थिला जे सोल्जर स्ट्रेट ही जीवो तो एठी कोन ला गोटे इंप्रूवमेंट हैला जीवो सीधा किंतु जेतेबेले ताको स्ट्राइक आउट करिवार थिबो काहाकू तो से डायगोनाली हिट करिवो तो ए जगह जो लॉ से जानी थिला ताको कोन कला टिके इंप्रूव कर दिया गला वर्तमान केस रे प्रत्युष खेल देखला पारे मोर गोटे क्वेश्चन तुमको केमती लागुची जे प्रत्युष ए खेलर बेस्ट मूवमेंटा केबे जानी परिबो एमती जदि बसिक से चेस खेल देखु थाए ताले से चेस खेल बुझिया पई एवं ता मम्मी को बुझिया पई ताको केते दिन लागिबो बहुत दिन लागि पारे कारण अलग अलग रूल अलग अलग मूवमेंट जेतेटा तुमर जेमती गोटीर पोजिशन से पोजिशन हिसाब रे पुणी गोटीर पोजिशन चेंज हो पार तो जदि ए स्टोरीटा को वर्तमान मु रिलेट करी फिजिकल वर्ल्ड सांगरे मो पाखरे पैरामीटर कौन अच्छी प्रथम पैरामीटर है नेचर प्रथम पैरामीटर है नेचर नेचर रो जो आर्किटेक्चर अच्छी नेचर को जी बनई से होचंती गॉड ओके एंड नेचर रे कौन अच्छी किछि लॉज अच्छी किछि लॉज अच्छी नेचर रे किछि लॉज अच्छी एंड नेचर रो लॉज को हमको बुझीबा को पड़िबो किंतु नेचर रो लॉज बुझीबा को हेले हमको गोटे किछि अलग लैंग्वेज भी दरकार वी नीड ए लैंग्वेज आमे लैंग्वेज केमते सिखु रे मनकर मु पचारिबी जे तमे एबीसीडी सिख आगे ए सिखिलो बी सिखिलो ए भला 26 लेटर सिखिलो तापरे कोन कलो वर्ड सिखिलो तापरे कोन कलो ना सेंटेंस शिखिल तो नेचर भी सही प्रोसेस रे जीवो ये स्टोरी रे हमर चेष्टा है कौन ना नेचर प्रति गोटीर मूवमेंट एटा होची लॉ किंतु को लॉटा बेस्ट लॉ सेटा तमे केतबेले भी क्लियरली कहि परिबोनी जदि तमे से लॉ को बुझिन लॉ को बुझिया पई तुमको कौन दरकार गोटे लैंग्वेज दरकार एंड से लैंग्वेज रे कौन ना तुमको इक्वेशन फॉर्मेट रे दरकार खाली लैंग्वेज तो हबनी जेहेतु एटा आमे पाठ पढुछु साइंस वी नीड एन इक्वेशन एंड ए इक्वेशन रो क्लैरिटी पई हमको जो जिनस दरकार एटा हला फिजिकल क्वांटिटी ए इक्वेशन रो क्लैरिटी पई जो जिनस दरकार दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी तो नेचर को बुझिबा पई जो लॉ अछि से लॉ को जदि आमे इक्वेशन रे करिबा इक्वेशन बुझिया पे हमको दरकार कौन फिजिकल क्वांटिटी स्टोरी तो बहुत भल लगुव स्टोरी समस्त को सुने को भल लगे बट आम स्टोरी को पॉज देकी आमर जोटा इंपोर्टेंस अच्छी आज का यूनिट और डायमेंशन ता भीतर को बर्तमान एंट्री करवा एंड जो थे प्रथम पैरामीटर आम पाइले जे कौन फिजिकल क्वांटिटी जिनसटा कौन व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी ना फिजिकल क्वांटिटी है इफ वी टर्म इट अ फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी रा माने हला एनीथिंग which can be measured directly or indirectly by an instrument and it obeys the nature's law और आमे कहूँ physics रो law इटा measure है परिबो directly or indirectly measure by an instrument directly or indirectly directly or indirectly and obeys
लॉज लॉज मीन्स फिजिक्स रे जो लॉज तुम फॉर्मेशन कराई फिजिक्स लॉ को ओबे कर तो जो फिजिकल क्वांटिटी आम रिप्रेजेंट करूँ फिजिकल क्वांटिटी फॉर्मूला कौन एक्जाक्टली आम देखा ना फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू आम कहूँ न्यूमेरिकल वैल्यू into unit is a comparison physical world new unit होची तम कोन it is a comparison for example करो मु कहबी लेंथ गोटे physical quantity हैला length is equal to 10 meter length is equal to 10 meter 10 is the numerical value and meter is the unit जदि मु कहबी mass if I call it mass it will be 24 kg so 24 is the numerical value and kg is the unit so this way the physical quantity is represented हमारा physical quantity को एमिति represent करा जाए तो physical quantity जदि जिबा types कौन कौन अच्छी physical quantity रो types of physical quantity broadly divided into two categories one is fundamental quantities other one is derived quantities other is derived quantities so fundamental quantity derived quantity भितर difference कौन exactly ना जदि fundamental quantity आमे कहूँ fundamental quantity है कौन the quantities which are not dependent on any other quantity for the presentation. To know more, we'll study details about fundamental quantities. The fundamental quantities माने मु कहली physical quantities which is not dependent on any other quantity to represent itself. जदि आमे फंडामेंटल क्वांटिटी रे देखिबा फंडामेंटल क्वांटिटी पे आमे कोन करिबा ना तार रिप्रेजेंटेशन अछि कोन दिस इज योर मुटा को मेजर करके लिखुची फंडामेंटल क्वांटिटी टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज नंबर 7 सातटा फंडामेंटल क्वांटिटी अछि नेचर रे टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी हला 7 एंड सातटा को छाड़ देले आ जो क्वांटिटी रहिला दोज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज तो फंडामेंटल क्वांटिटी विषय डिस्कशन करबा कोन कोन फंडामेंटल क्वांटिटी अछि तो वर्तमान आमे देखिया फंडामेंटल क्वांटिटी एठी हला तमर रहइबो क्वांटिटी here you have unit and here you have symbol suppose करा प्रथम फंडामेंटल क्वांटिटी होची मास तार यूनिट होची केजी तार यूनिट होची केजी
and symbol is also same as kg. तापरे होची length रो होची मीटर represented by the symbol m. Then time रो unit होची second represented by the letter s. Then temperature रो होची आमे कहूचु केल्विन. Temperature रो कहूचु केल्विन represented by the letter k. Then electric current एटा होची एम्पियर represented by the letter A. Then another unit is called, another quantity called luminosity. Luminosity is unit is candela, which is represented by C. Candela CD. Then last है amount of substance. Amount of substance, which is represented as, or our unit है mole. याको लेखन्ति symbol रे MOL. So these are the detailed of your fundamental quantities. These are the detailed of your fundamental quantities. These are total 7 fundamental quantities, and आउ जो quantity रहिले आमे तांको कहबा derived quantity. तो जेतेबेले मु पचारछु 7 fundamental quantity, जदि मु तुमको डायरेक्टली पचारिबी जे तमरो fundamental quantity 7टा अछि मते कुह, बहुत टाइम रे पिलांकर कोन होय एटा मने रहे नाही. तो या पे गोटे शॉर्ट आमे एक्रोनिम बाहर करछु और शॉर्ट फार्मूला सेटा को आमे कहूछु कोन. नाउ वी कॉल इट एज मेटल स्क्वायर. We call it as metal square. M E T A L square. आमे जदि एटा मन रखि दबा, इफ वी ए जिनसटा को मन रखि देलु ताले मोर सातरा सारा फंडामेंटल क्वांटिटी केबे भी भूली भी मु नाही. केमते मन रखिबो मेटल स्क्वायर रे? M stands for mass, E stands for electricity, E stands for electricity. T रे स्क्वायर अछि दीटा, गोटे हला टाइम आ गोटे होची टेम्परेचर. ए रे हला तमरो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. एल स्क्वायर रे दीटा अछि, गोटे हला लेंथ आ गोटे हला लुमिनोसिटी. This is how metal square formula रे तमे इजीली छात्रा सारा fundamental quantity को मन रखि पारि. Okay. Now we move on to derived quantities. Now we move on to derived quantities. So what is derived quantity? The quantities which are expressed by using the fundamental quantity. Okay. Quantities expressed using the other quantities.
किसी कौन एग्जांपल फॉर एग्जांपल कर गोटे एग्जांपल होची तमर डिराइव्ड क्वांटिटी रहला वेलोसिटी वेलोसिटी तो वेलोसिटी रो फार्मूला कौन एग्जैक्टली ना डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो देखो ये दीटा सारा डिस्प्लेसमेंट कौन गोटे वेलोसिटी को बाहर करिया हेले मु दीटा क्वांटिटी यूज कली डिस्प्लेसमेंट यूज कली टाइम यूज कली सो इट इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी। जदि मु आ गोटे क्वांटिटी सपोज कर बाहर करी कौन ना सपोज कर मास सॉरी मोमेंटम 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 पई फार्मूला हैला मास इंटू वेलोसिटी। तो दीटा टर्म अगेन यूज कली मास यूज कली वेलोसिटी यूज कली। तो ये भाया दीटा फिजिकल क्वांटिटी को नेकी अलग अलग क्वांटिटी जदि हमें रिप्रेजेंट कलु देन दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी बाय यूजिंग अदर क्वांटिटीज। गोटे फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली जदि हमें एक्सप्रेस करिया को चाहूचु अदर क्वांटिटीज रो हेल्प नेकी आमे ताको एक्सप्रेस करिबा दोज आर कॉल्ड आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके तो डिराइव्ड क्वांटिटीज रे सब बेले मन रखिबो कोन ना डिराइव्ड क्वांटिटी जेतबे आमे बाहर करूचु एठी आ गोटे इंपोर्टेंट जिंस आसीबो कोन जोटा मु कहली यूनिट वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट यूनिट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। यूनिट हैला कोन इट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट यूनिट होची स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। तो एपर्यंत आमे कौन जानले ना फिजिक्स कहला माने दीटा जिनस बुझाए गोटे हैला मैटर आ गोटे हैला एनर्जी एंड मैटर एंड एनर्जी भितर आमे बाहर करचे फिजिकल क्वांटिटी बाहर कले यूनिट बाहर कले आउ गोटे टर्म मोर रही गला दैट इज कॉल्ड डायमेंशन वी कॉल इट एज डायमेंशन। तो डायमेंशन कौन व्हाट एग्जैक्टली डायमेंशन इज डायमेंशन रो डेफिनेशन होची यदि डायमेंशन रे कथा बा डायमेंशन कौन एग्जैक्टली ना द पावर to which the power to which the fundamental quantities are raised। ताको कहबा आमे डायमेंशन। जनरली डायमेंशन यूज कला बेले आमे कौन यूज करू ना आमे तीनटा जिनस यूज करू मास लेंथ एंड टाइम ए तीनटा जिनस आमे यूज करू। डायमेंशन यूज कला बेले आमे सब बेले एतिक जिनस यूज करू कौन कौन ना मास लेंथ एंड टाइम। सपोज कर गोटे एग्जांपल मु दउची डेंसिटी आमे डेंसिटी रो डायमेंशन बाहर करिबा डेंसिटी डेंसिटी रो फार्मूला होची मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास पई आमे नौचु लेटर कोन सिंबल रे कैपिटल एम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम रो फार्मूला कौन रे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो आम को प्रेजेंट करवा एम लेंथ पाई लेटर है एल ब्रेड्थ पाई भी एल एंड हाइट पाई भी एल। so this is m divided by l cube or
आम या लिखि परिबा कैपिटल M टू द पावर 1 L टू द पावर -3 बट मोर एठी T नाही मु कहिछि आमे रिप्रेजेंट कले कोथे रिप्रेजेंट करिवारे मास लेंथ टाइम तीनटारे so T will be 0. This is the dimension of density. जदि मते पचरा जाए what are the dimensions of density ताले मोर आंसर कौन हबो ना मु कहिछि कौन ना the power to which the fundamental quantity raise. यदि मते कोन बडी ask a question what is the dimension of density then my answer will be the dimension of density is 1 in mass -3 in length and 0 in time. This is my answer. 1 in mass, -3 in length and 0 in time. This is the dimension of density. So dimension एटा formula वर्तमान आमे जिबा dimension formula को that how to derive a dimensional formula and without which total physics रो most of the foundation आ ऊपर depend करे. तो आमे गुडाए physical quantity रो dimension formula बाहर करिबा and तार calculation देखिबा how these are being done. Suppose करो मु रिपेयर कोची गोटे ये भाया कॉलम बने दउची दिस इज फिजिकल क्वांटिटी दिस इज फिजिकल क्वांटिटी शॉर्ट टर्म रे पी क्यू बोले लिखुची फिजिकल क्वांटिटी here we have relation with other quantity relation with other quantity relation with other quantity. Here I have dimensional formula then finally I have unit. ये way रे हमें understand करिबा so it will be easier because the chapter is concerned with unit and dimension. Okay. So unit and dimension रो मु तमरो dimension portions टा को cover करूची then we will discuss about the unit. So physical quantity रे प्रथम जिंस जोटा मु नउची that is called length. Length आर अदर क्वांटिटी संगे कौन से रिलेशन नाही एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लेंथ विल बी सब बेले मन रखिबो जेतबा डायमेंशन आमे लेखुचू इट शुड बी रिप्रेजेंटेड ऑलवेज इन ए कैपिटल लेटर एंड स्क्वायर ब्रैकेट विल बी देयर सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल एंड यूनिट कहला माने जनरली आमे बुझू कोन एसआई यूनिट व्हाइल टीचिंग यूनिट आई विल क्लैरिफाई दोस. It will be meter. Next will be mass. Next physical quantity is mass. Mass will be represented by capital letter M and its units is kg. Then I have time. It is represented by T. Its unit is second. Then we have another important physical quantity. We call it as area. तो फिजिकल क्वांटिटी एरिया रो फार्मूला हला रिलेशन विथ अदर क्वांटिटी रे ए जगह रे तमर कोन से रिलेशन नाही डायरेक्ट क्वांटिटीज एगुडा बट एरिया आसिला माने मोर आसिला कोन ना लेंथ इनटू ब्रेड्थ लेंथ इनटू ब्रेड्थ
तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ में लेंथ पाई भी नेबी मु एल एंड ब्रेड्थ पाई भी नेबी मु एल तो एल इंटू एल it will be L square and unit will be meter square. L को आमे कहिछु जेतेबेले भी आमे फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करिबा it will be always represented in three terms, that is M, L and T. So this could be represented as dimension formula रे M नाही M0, L अच्छी L1, T नाही T0. All are in capital letter. Here M1, L0, T0, T, M0, L0, T1. तो ये भले रिप्रेजेंट करा जाए. तो एठी मोर L2 रे कौन प्रेजेंट करी मु मोर L2 अच्छी M आउ T तो नहीं. So this is represented as M0, L2, 20 and you have unit is meter square. Then I have volume. Then I have another parameter which is volume. Volume is length into breadth into height, which is equal to L into L, because all are of length. This will be L cube, or we represent it as M0, L cube, T0. That is equal to meter cube. This is how the physical quantity, relation with quantity, dimension formula and unit. We will do a few more quantities. Suppose karo we take velocity. This is physical quantity. Relation with other physical quantity, dimensional formula, and here I have unit. जेतेबेले भी तुम जिनसटा स्टडी करिबो, this should be the format. ये format रे पढ़ले तुम ପାଇଁ easy हबो. Next physical quantity I am taking it as velocity. Velocity रा formula होची displacement divided by time. Displacement divided by time. So displacement पाई हमें नबा कौन लेटर L, time पाई T. We can write it as L1, T तले अच्छी ऊपर कुठी गले -1 हबो T to the power -1, और completely जदि हमें लिखिबा MLT फॉर्मेट रे M0, L1, T-1 रो ब्रैकेट. यूनिट कौन हम वेलोसिटी रो जमते को डिस्प्लेसमेंट पाई होची एसआई यूनिट मीटर, एटाला सेकंड. सो इट इज मीटर पर सेकंड. यू कैन रिप्रेजेंट इट इज आइदर और मीटर इनटू सेकंड इनवर्स. नेक्स्ट इंपोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सेलरेशन. Next important is acceleration.
that is equal to velocity divided by time. Velocity divided by time. तो velocity रो dimension formula होची m0 l1 t minus 1 divided by time means t, that is equal to again m0 l1 t तले अच्छी ऊपर को उठी गला -1 हबो t to the power -2 and unit is meter per second square. Meter per second square. Next we have important parameter force. Formula is mass into acceleration. Mass into acceleration. So dimension formula for mass, it is m, acceleration is l1 t minus 2. So you can get the formula as m1 l1 t minus 2 and SI unit is Newton. SI unit is Newton. We have another important formula. We'll move on to the next. Work. Work is given as force into displacement. Force into displacement. So dimension formula for force is given as m1 l1 t minus 2 जोटा आमे already previously derived कर सारचे. Force रो आमे already derive कर देचे m1 l1 t minus 2 ताको directly use करूची into displacement माने l. So this will be m1 l2 t minus 2. Okay, then unit, work ro unit, it is joule. It is represented as joule. Then we have energy. Energy is nothing, it is amount of work. Amount of work. So dimension will also be same, that is m1 l2 t minus 2 and unit will also be same, that is joule. Then we calculate power. Power is equal to work divided by time. Work divided by time. The dimension formula of work is, we already got it as, हमें already बाहर कर दीचे m1 l2 t minus 2 divided by time. So this will become as your m1 l2 t minus 3 and its unit is watt. SI unit is watt. Then we move on to the next parameter, that is pressure. Pressure is equal to force divided by area. Force is given as m1 l1
t minus 2 whole divided by area is L2. If we solve it, we get as m1 ऊपर उठी गले -1 t to the power -2 and it is force by area. ऐसा unit is Newton per meter square. So this is how the physical quantities are being represented. This is how we are generating quantities. Okay. The question is that is there any other quantity which have no dimension? Dimension नथिबो एमती किसी physical quantity अच्छी? Yes, they are. One is your angle. Angle. And angle la formula कौन? ना arc by length. Arc by radius or arc by length. जोटा मु क्लियर कर दोची तमे ऑलरेडी 10th रे को पढ़ी सारथिबो. This is the angle. We call it theta. गोटे सर्कल भितर यदि आमे नबा center, this is called theta. Angle हैला theta. This is called r. Radius. This is called arc. और आमे कहूचो l. तो आर्क पाई आमे नबा कौन डायमेंशन में एम एल टी भितरु एल एंड रेडियस पाई भी नबा एल. ओके. तो कैंसल हो जिवो. इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज m0 l0 एंड t0 कारण सेम यूनिट रही चेंज इन लेंथ 5 यूनिट तुम कैंसल हो जिवो किंतु डायमेंशन नथिले भी यार यूनिट अछि कारण आम एंगल टाको मापु जनरली रेडियन रे. यूनिट होची रेडियन. तो डायमेंशन नथिले भी यार यूनिट अच्छी. वी कॉल इट एज रेडियन. we divide another quantity जोटा को हमें कहूँ टाइम पीरियड. another important physical quantity is time period. और टाइम पीरियड है frequency. we call it frequency. Frequency is 1 by time period. 1 by time period. That is equal to m0 l0 t to the power -1 and unit is hertz. Unit is hertz. We have another physical quantity which we call it as strain. Strain no formula होची change in dimension divided by original dimension. Change in dimension by original dimension. तो जदि लेंथ थिबो change in length by original length. जदि वॉल्यूम थिबो change in volume by original volume. तो तमरो डायमेंशन कैंसल हो जिवो. It will be m0 l0 and t0 and here जेहेतु दीटा सारा सेम डायमेंशन तो इट इज नो यूनिट. यार कौन सी यूनिट नहीं. तो दीज आर द थिंग्स अबाउट योर डायमेंशन. केबे भी फिजिक्स पढ़ला बेले डायमेंशन को घोषिया चेष्टा करबनी. बेटर कौन यू ट्राई टू रिमेंबर द रिलेशन विथ द अदर फिजिकल क्वांटिटीज. अदर फिजिकल क्वांटिटी संगे यार कौन रिलेशन अच्छी से जिनसटा को तुम बुझाई चेष्टा कर एंड सेटा बुझीगले इट विल बी लॉट इजियर फॉर यू. जदि तुम फिजिक्स रे घोषिया चेष्टा कर तुम केवल टाइप ऑफ टाइम वेस्ट. और मुझे एमती कहबी जे दी प्रकार मेथड रे पिला पाठ पढ़ती. गोटे मुंड खटे की पढ़ती आ गोटे खट मुंडे की पढ़ती.
जदि घोषिया चेष्टा करिवो तमे खट मुंडे की पढ़ला भाया हो ब्रेन यूज करके पढ़ाई चाहिए ताले बहुत बेटर वे रे विदाउट लेस एफर्ट तुम फिजिक्स हम दुनियार सबुठ इजी पाठ बट मेक इट श्योर जे तुम प्रति टर्म बुझुच घोषिया चेष्टा करुन एंड ताको फिजिकल वर्ल्ड रे रिलेट करि पारुछ से जिनसटा कौन अच्छी तो दीज आर ऑल अबाउट योर डायमेंशन आ गोटे पोर्शन जो तुम रही जाइए यूनिट्स बिकॉज आजिकार काम थिला हमर यूनिट एंड डायमेंशन विषय डिस्कस करिबा नाउ विल मूव ऑन टू द यूनिट्स व्हाट इज एक्जाक्टली यूनिट तमे ओडिया रे कहले आकु बुझुछ एकक बोली एकक माने मेजरमेंट अच्छी कौन सपोज कह तुम कौन सी दुकान को जाऊच दुकान को गले कौन हम जदि आलू मागुच केमती मागुच भाई मते आलू 2 किलो दियो ना एमती मागुच भाई 2 लिटर आलू दियो तो प्रति फिजिकल क्वांटिटी सांगे गोटे यूनिट एसोसिएटेड होकी थाए जदि तुम कौन सी जगह क्षीर मागिया को जाऊच केमती मागुच भाई मते 1 लिटर क्षीर दियो तो गोटे फिजिकल क्वांटिटी रो कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन पाई फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग रु मु कहिची जदि तुम गोटे फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करिया को चाहूच यू नीड 2 थिंग्स नंबर 1 इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकंड वन इज यूनिट फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग रे मु कहिची गोटे फिजिकल क्वांटिटी रा कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन पाई हमको दुईटा जिनस दरकार गोटे हला न्यूमेरिक वैल्यू गोटे हला यूनिट मनकर सपोज कहूची मास कहले मु कहले 5 किलो आलू और 5 kg तो kg इज द यूनिट 5 इज द नंबर जदि मु लिक्विड कहूची लिक्विड कहले मनकर मु कहले 10 लीटर्स तो 10 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू लीटर इज द यूनिट तो कौन सी भी फिजिकल क्वांटिटी रा कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन पाई वी नीड 2 थिंग्स वन इज नंबर अनदर वन इज यूनिट ये दुईटा कॉम्बिनेशन रे गोटे फिजिकल क्वांटिटी को हमें कंप्लीटली रिप्रेजेंट करि परिबा बट क्वेश्चन इज दैट यूनिट्स एक्जाक्टली कौन यूनिट्स हला हमें हाउ स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट एंड यूनिट्स टा हमें मन इच्छा करि परिबा नहीं देयर आर सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑलरेडी बहुत सारा सिस्टम अच्छी को सिस्टम अच्छी जनरली फिजिक्स रे हमें कौन स्टडी करबा से विषय टिके डिटेल्स देखैदेबा द व्हाट आर द सिस्टम ऑफ यूनिट मो पाखरे यूनिट्स रो कौन कौन सिस्टम अवेलेबल अच्छी दैट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स so number 1 is CGS this is one system CGS okay in CGS it stands for centimeter gram and second this is called CGS next MKS this is meter kg and second meter kg and second third one FPS this is foot pound and second foot pound and second last but not the least जोटा को आमे कहूँ सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट और वी कॉल इट एज SI यूनिट सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट so these are the system of units available with me मो पाखरे एतिकी फिजिकल सिस्टम एंड या भितर मोस्ट पॉपुलर होची SI सिस्टम
most popular is SI system. Whenever we do any calculation in physics, फिजिक्स तो जितेबाला आम कौन कैलकुलेशन करवा कौन न्यूमेरिकल करवा आमर प्रायोरीटी सब बेले केमती आम एसआई यूनिट रे कन्वर्ट करवा तो जितेबाला आम फिजिक्स पढ़िलु मुझे तुमको टिके रिव्यू जस्ट कर दूची फिजिक्स कहला माने कौन ना दुईटा जिनस को बुझाऊँगी कौन गोटे है मैटर आ गोटे है एनर्जी एंड मैटर एंड एनर्जी बोथ आर कंटेन्ड इन नेचर नेचर अच्छी नेचर रु सबुतक लॉ बाहरुची ओके तो लॉ को बुझा पड़ो एंड लॉ बुझे पहले हमको फिजिकल क्वांटिटी बुझा पड़ो तो फिजिकल क्वांटिटी बुझा पड़ो देन तापाई हमको कौन यूनिट्स आउ डायमेंशन बोथ सारा हमको अंडरस्टैंडिंग करिया को पड़ो so this is all about your unit and dimension. I hope in today's class I have cover up both unit and dimension. Dimension formula भी हमें cover up करिचे. But next most important thing is why we go for dimension. हमें जो dimension formula m0 l1 t minus 3 बाहर कले तार exactly use टा कौन. So we'll do it in the very next class. You present in the class, you will get more clarity that what is the use of those dimensional formulas. The dimension formula रा exact use टा कौन. तार बहुत तीन प्रकार use अच्छी and we will detail study. That is the next class will be based on dimension formula and its use. Okay. So thank you all for today. We'll meet in the next class and we'll continue the lecture from where we left it. जो जगह तुमको छोड़ा है से जगह तुमको again मु कहूची this batch will continue on this तुमको एमती YouTube रे available हबा but for your better understanding better you download DP Chemistry Odia app. Look inside that app. All the recording lectures will be there and most important thing is that तमर सेठी notes भी तुमको provide करा जीवो and तमर link रे WhatsApp group रो दिया हिची and Telegram channel रो भी link दिया हिची ताकू join करो for more better and receivement because तमर से जो group अछि से group भितरे हमें total जिनस को study करके दे जीवो all the materials regarding कारण किसी extra numerical हला notes हला those will be provided in the group only or in the app only. So better again कहिबी for clarity and more understanding download DP Chemistry Odia app. Go inside that. You may not get it immediately. तमें शायद immediately ये video पाइबो नहीं but within a period of short days those videos will be available because more पिलांकर complain हला जे सर YouTube देखला बड़े distraction होची गोटे वीडियो देखो देखो पाठ पढ़ा पाइन तो खोलीची बट आ गोटे को पढ़ोची बट तमें ऐप भीतर खोलिबो they will all appear in a sequence and तमर पढ़ाटा focus से की रहिबो. Download DP Chemistry, make your career solid. We are always with you. We will continue the class, watch the class and if you like it, tell your friends. If you don't like it, tell us. Thank you all. We'll meet in the next class.